आह, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस। ओके, आजकल काफी न्यूज में चल रहे हैं। तो पहला है स्टेटस ऑफ द वायरसेस। ओके, देखो यार, एन इन्फेक्शन पार्टिकल विद जीन्स एंड प्रोटीन। मोटी मोटी बात ये समझो, वायरस अपने आप में इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने लायक सेल नहीं है, इसलिए हमने उसको किसी भी किंगडम में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकता है। क्योंकि ये ना लिंक, it's a link between a dead and or you can say inorganic and organic material, or you can say dead and life organism. So it lies in between. That means if it will stay out of the body, it is dead, and if he gets the host body मतलब किसी के अंदर घुस गया, बैक्टीरिया में भी जा सकता है। बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, वायरस उससे भी छोटा होता है। इट कैन पेनिट्रेट इवन द बैक्टीरिया, उसके इसको बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट मोटी मोटी बात यह है कि वायरस सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट नहीं है। इट नीड्स अ होस्ट टू फीड इटसेल्फ एंड टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, वो उसकी रिप्रोडक्शन में देखेंगे। तो द इन्फेक्शियस पार्टिकल विद जीन्स एंड प्रोटीन, सो बेसिकली इफ यू सी, so there is only, this is a प्रोटीन कैप्सूल। ओके, ये बाहर की कवरिंग है प्रोटीन की, और बीच में आपके क्या हो सकता है, आइदर तो डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ये है जेनेटिक मटेरियल। तो इट हैज ओनली टू कंपोनेंट, जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी आइदर अ डीएनए और इट कैन बी आरएनए, एंड दोनों नहीं होता, एक ही होगा, आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, और बोथ भी हो सकता है। एंड बाहर का होगा अब प्रोटीन कवरिंग। अब प्रोटीन का नाम कुछ भी खास नहीं है, उसको वैसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रोटीन कैप्सूल का काम कर रही है, कैप्सूल देखा है ना, कैप्सूल वो आउटर कवरिंग होती है दवाई की, है ना। तो अगर वो कैप्सूल का फॉर्म कर रही है तो उसका नाम रख दिया हमने कैप्सिड। कैप्सूल लाइक न्यूक्लियोटाइड इज कैप्सिड, तो दिस इज कैप्सिड। तो दो चीजें हो गई, एक जेनेटिक मटेरियल, अदर वन इज कैप्सिड। कैप्सिड इज द नेम ऑफ द प्रोटीन, कुछ खास याद रखने की, कैप्सिड, कैप्सूल जैसा कैप्सिड। सो देन existing in the shady area between the life and the dead thing or form can be DNA virus or the RNA virus, वो हमने बता दिया। outer covering of protein is capsid, ये भी मैंने आपको बता दिया। bacteriophages, look, virus can infect starting from the bacteria till the animals। किसी को भी एक बैक्टीरिया जो है, एक वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें एक शब्द आता है दैट इज फेजेस। What does it mean is, फेज एक्चुअली, फेज का जो लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू ईट, खाने वाला। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे, ऑटोफेज हो सकते हैं, हिट्रोफेज हो सकते हैं। मतलब ऑटो मतलब अपने आप खाने वाले, हिट्रो मतलब बाहर से खाने वाले। उसी तरह से बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को ही खा जाए, है ना। अगर वायरस उसके अंदर चल जाएगा तो एक टाइम बाद बैक्टीरिया को भी मार देगा, तो उस वायरस को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरिया को ही जो ईट कर सकता है उसको बैक्टीरियोफेज कहेंगे, और वो टर्म यूज होती है वायरस के लिए जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, देखो ये इसका मैंने बताया सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल था और बाहर प्रोटीन थी। तो व्हाट हैपन, वायरसेस रेप्लिकेट ओनली इन द होस्ट सेल। तो होता क्या है कि इस, ये अपना फूड भी नहीं बना सकता है, इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट यूनिट, सो इट कांट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, नीदर इट कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन भी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड करती है, वो हम देखेंगे कि वो रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप हैं। बट मोटा मोटा इट डजंट हैव एनी ऑर्गेनली, मतलब इसको खाने पचाने पैदा करने के लिए दूसरे सेल के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। ओके, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब दिस इज अ ऑब्लिगेशन। जैसे ये अपने आप में ऑब्लिगेट है, मतलब इसका कोई फायदा उस बैक्टीरिया को या उस, और अब बैक्टीरिया में बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी वायरसेस की स्टडीज सेल्स के ऊपर हुई है उसके लिए जो बेस्ट अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है।
मतलब बैक्टीरिया के अंदर इसका इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा स्टडी किया गया है यूनिफॉर्मिटी के लिए. सो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड मींस दे कैन रेप्लिकेट ओनली विद इन अ होस्ट सेल. ये भी बता दिया. फूड चाहिए वो भी होस्ट सेल से, रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन चाहिए वो भी होस्ट फेज से. पर एक क्वेश्चन होता है कि एक तरह का वायरस क्या सब लोगों में आ सकता है, हर तरह के सेल में आ सकता है? तो ऐसा नहीं होता है. उसके भी अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होते हैं. बेसिकली सारा जितना रेस है ना, ये अपने सर्वाइवल के लिए है. चाहे वो ह्यूमंस का है, चाहे वायरसेस का है, चाहे बैक्टीरिया का है, चाहे किसी का भी है. तो अपने आप को, अपनी जीन्स को बचाने के लिए हम ये रेस चल रहा है. तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक होस्ट होता है. मतलब एक वायरसेस अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया को अगर एक वायरस इन्फेक्ट करता है, दैट डजंट मीन दैट इट कैन अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, और इट कैन अफेक्ट अदर एनिमल्स ऑल्सो. लेकिन ये ट्रांस रेसिस में भी हो सकता है और ट्रांस एनिमल्स भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि कोई वायरस किसी दूसरे जानवर को के अंदर रहता हो और वो हमारे अंदर भी जीवित रह सकता है. बट इन टोटलिटी they need they have the limited host, like humans, like pigs, like dogs. वो अलग अलग उसके होस्ट रहते हैं. तो जरूरी नहीं है जो बैक्टीरिया, all the viruses can survive in our, because our body temperature is different, our body response is different, है ना. So we have the different kind of immunity. So it doesn't mean that any virus can attack our body. It can go in and it can die because it may not replicate itself. Then it has a reproduction. Reproduction means सारा कहानी, पैदा होना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना. This is the whole life for humans also, for viruses also. So in viruses we saw that it for the food it is dependent upon the other animal, other organism, and same way it for the reproduction also it is dependent on other cells. So अभी मैं इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये बात बताता हूं और वो बहुत इजी है समझना. यू सी, अगर एक वायरस एक सेल के अंदर जाता है, नाउ इसके अंदर दो तरह से वो रेप्लिकेट कर सकता है. रेप्लिकेट मतलब अपने आप को बढ़ा सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है. एक होता है लाइटिक. इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूं ना, और आजकल काफी न्यूज में भी है वायरस, तो पूछ सकते हैं. लाइसोजेनिक, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक. जेनिक का मतलब क्या हुआ? जेनिक का मतलब एक तरह से प्रोडक्शन हुआ. इसका मतलब मैं समझाता हूं. अभी एक सेल है, उसके अंदर वायरस चला गया सपोज. अब उसके पास दो तरीके हैं. आइदर तो ये इस सेल को मार दे. मार कैसे दे? बिकॉज इट्स आरएनए और डीएनए जो इसके अंदर गया, इसकी सारी ऑर्गेनेलीज को, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सब चीजों को उसने कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया. अब वो सब क्या कर रहे थे? वो उसके अंदर प्रोटीन्स बना रहे थे. जो सेल के अंदर दे वर मेकिंग प्रोटीन्स, और इसने बोला कि हटाओ, तुम्हारा कोई प्रोटीन, डीएनए, आरएनए नहीं बनाना है, अब से सिर्फ इस सेल के अंदर वायरसेस ही बनेंगे. तो इसमें सिर्फ वायरसेस बनते रहे. बट इसका एक कैपेसिटी है. आफ्टर अ पॉइंट जो बहुत सारे वायरसेस हो जाएंगे तो ये सैचुरेशन में आ जाएगा. तो फिर क्या होगा? ये सेल डेड हो जाएगा. ये सेल वॉल रप्चर हो जाएगी. रप्चर होने के बाद ये सारे वायरसेस दिल गो इनटू अनदर होस्ट, दूसरे सेल्स के अंदर ये चले जाएंगे और फिर वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे. फिर ये भी मर जाएंगे, फिर दूसरे में करेंगे. तो बहुत जल्दी 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 ये ग्रो करेगा. एक तरीका तो ये हुआ. तो इसको क्या बोलेंगे? लाइसोजेनिक, सॉरी लाइटिक. दिस इज लाइटिक साइकिल. जेनिक में क्या होगा? वंस दैट वायरस दैट विल गो इनसाइड द सेल, वो अभी उसके अंदर क्या है? डीएनए और आरएनए है. वो क्या करेगा? उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज उस सेल का जेनेटिक मटेरियल एक डीएनए है, तो इस डीएनए के साथ वो जाके चिपक जाएगा और इसका हिस्सा बन जाएगा. कैप्चर नहीं करेगा, उसके अंदर घुल मिल जाएगा, पीछे से वार करेगा. अब ये फिर क्या हुआ? इस सेल ने एक और सेल बनाया, है ना. ऐसे होता है ना, एक सेल दूसरा सेल बनाता है. उसके अंदर भी ये वायरस ऑटोमेटिकली चला गया. क्यों? क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर वो वायरस जाके अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया. तो जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो इसके जेनेटिक मटेरियल से मिक्स हो गया. अब दूसरे सेल में चला गया. ये अभी जिंदा है, ये भी जिंदा है. इसने एक और सेल बनाया, ये उसके अंदर चला गया. बट ये स्लोली स्लोली प्रोसेस होता है. तो ये मतलब होता है लाइसोजेनिक का. ये है लाइटिक फेज. तो ये दो तरीके से
कोई भी वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है। अब यहां से बहुत ही देखो, अगर किसी को टेक्निकल क्वेश्चन पूछना होगा वो क्या बोलेगा कि अगर कोई वायरस बहुत ज्यादा विरुलेंट है, विरुलेंट का मतलब बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो कौन सी इसमें आएगा? ऑफ कोर्स वो लाइटिक में आएगा। और कोई स्लोली स्लोली जा रहा है तो कौन सी रिप्रोडक्शन में जाएगा? लाइसोजेनिक में जाएगा। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या चांसेस है एक वायरस के ज्यादा विरुलेंट होने के, इफ ही इज अ लाइटिक सॉर्ट ऑफ virus or is it a lysogenic virus in a reproduction thing. Now ये वही है, सेल्फ असेंबल इनटू न्यू वायरस, वायरल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, कैप्सिड, कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल है। तो ये हमारे वायरसेस थे। वायरसेस के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दोज डिजीजेस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज अ नॉट मेयरली, देखो हेल्थ की डेफिनेशन टाइम टू टाइम बहुत बार रिवाइज हुई है। आई थिंक दिस इज गिवन इन WHO बाय 1992। तो इसमें दे इट्स नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट इट्स अ फिजिकल वेलबींग, mental well-being and social well-being. That means if you are physically fit, you are mentally fit and you are socially acceptable, then you are you can say that you are healthy. आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी फिट हो, बट सोशली आप एक्सेप्टेंस नहीं है आपकी, इन द सेंस कि आप क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ हो, तो आप मेंटली रिटार्डेड ही हो एक्चुअली। सो नेक्स्ट विल कम टू द ह्यूमन डिजीजेस। ह्यूमन डिजीजेस मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस। दो चीजें हो सकती हैं जब भी कोई बीमारी एक आदमी को होता है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। वन थिंग, आइदर वो आदमी के अंदर से कुछ हो रहा है या बाहर से हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बीमारी पैदा हो रही है, आइदर तो बाहर से कोई ऐसी चीज हमारे अंदर जा रही है जिससे वो बीमारी हो रही है, आइदर वो हमारे अंदर ही पनप रही है, उसका किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है कंजेनाइटल डिजीज एंड दूसरा आता है एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल का मतलब होता है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कोई भी डिजीज इफ इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड एज द कंजेनाइटल डिजीज। एंड एक्वायर्ड, it is more of a genetical disease. Congenital you can say from the birth itself, but most of the time it is inherited. Anyhow, acquired diseases develop after the birth, means from the outside or from the inside also deficiencies and all, so that will come the acquired disease. So acquired diseases can be communicable or non-communicable. What does it mean? Means if you have a disease and if you can spread it to other person, it is a communicable. वो कम्यूट कर रही है एक आदमी के ऊपर, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच मीन्स यू हैव द डिजीज बट आपको कोई आप उसको दूसरे को स्प्रेड नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो इन द नॉन, जैसे अभी क्वेश्चन आ जाए कि अभी ये तो नहीं पूछेगा, ये तो बहुत ही बेसिक है कि कोरोना वायरस इज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज। डायबिटीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपको अगर किसी आदमी को डायबिटीज है तो क्या वो दूसरे साथ में बैठे हुए आदमी को भी डायबिटीज होगा उससे? ऐसा नहीं होता। तो इट्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एनी हाउ, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इट कैन बी डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन। डीजेनरेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन। सो डिस्ट्रक्शन दो कारणों से हो सकता है, आइदर एज रिलेटेड हो सकता है, इफ पर्सन इज एजिंग, so it can be degeneration. अब 60 साल में किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, it can be degenerative disease. दूसरा डेफिशिएंसी डिजीज। तो सेकंड पार्ट इज कि एज तो कम है लेकिन उसमें, जैसे चलो एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, इफ इट इज डेवलपिंग आफ्टर 60, तो इट्स मोर ऑफ की एज, जो सेल एजिंग है वो इस लिमिट पे पहुंच गई है कि सबको होना नहीं चाहिए बट फिर भी हो जाता है, देन इट इज अ डीजेनरेटिव चीज थिंग। एंड अदर थिंग इज डेफिशिएंसी। अगर उसमें कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, तो भी दैट कैन लीड टू जॉइंट डीजनरेशन। तो इट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे सारे विटामिन, मिनरल्स, जो भी एसेंशियल चीजें हैं, इफ वी डोंट हैव दैट देन वी कैन लैंड अप इन डेफिशिएंसी डिजीज। एलर्जीज आर समथिंग विच इज योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग सम पैथोजेंस लाइक pollens है। Now pollens are everywhere and everyone of us is inhaling the pollens, but some people, you know, their body doesn't accept that pollen, है ना, तो उसके कारण उनको एस्थमा हो सकता है। So this is a common infection of common form of allergy.
Other thing is you might be allergic to many things, like some might be allergic to milk, to gluten, to other parts. So not necessarily कि एक एलर्जन सबके लिए एलर्जन होगा. एक आदमी के लिए वो एलर्जिक हो सकता है, दूसरे के लिए वो एलर्जिक नहीं हो सकता, बट उसको एलर्जन कहते हैं. देन कैंसर, ये इसके ऊपर तो बहुत सारी थियरीज अभी भी चल रही हैं. यू कांट पिन पॉइंट एक्चुअली कैंसर ना, कैंसर इज नॉट अ सिंगल डिजीज. कैंसर बहुत तरह का होता है, बहुत जगह होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी थियरीज बदलती रहती हैं. मैंने कहा ना, साइंस इज अ स्टोरी. ये इस कैंसर के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं. some of those hypotheses are proven, some are not proven, so we can't actually pinpoint the thing कि इसके कारण है. मोटा मोटा हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई सेल, कोई भी एक सेल आपकी बॉडी का कंटिन्यूसली उसको इरिटेट हो रहा है वो, और वो इरिटेट होकर डिवीजन स्टार्ट कर देता है. मतलब होता क्या है, एक सेल होता है, वो मेच्योर होता है और फिर वो दूसरा सेल बनाता है, और धीरे धीरे ये डाई डाउन हो जाता है. ये सेल तीसरा सेल बनाता है, धीरे धीरे ये डाई डाउन होता है. लेकिन अगर ये एक सेल 4 सेल बना रहा है, 4 सेल 8 सेल बना रहा है, अभी तक ये डाई डाउन नहीं हुआ, तो ये प्रोलिफरेटिव जो ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेटिव मतलब बहुत सारी ग्रोथ होती है सडनली एक जैसे सेल्स की, दैट इज कॉल्ड एज द कैंसर. अदर डिजीजेस, इसके हाइपोथेसिस कैंसर की एक ये भी है कि आइदर तो सेल का लाइफ साइकिल ही बड़ा हो जाए, तो भी आपका ट्यूमर बन सकता है. दूसरा, सेल का लाइफ साइकिल तो बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ गया है. ल्यूकेमिया के केस में दोनों का ये है. अदर डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू द वेरियस फिजिकल एजेंट्स और एनी अदर रीजंस. अब सारी चीजों को, सारी बीमारियों को अगर इसमें से कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, तो दैट इज अदर डिजीजेस. नाउ विल कम फर्स्ट फॉर द कंजेनाइटल डिजीज. कंजेनाइटल डिजीज में नॉर्मली जीन्स जो है दे आर इन्वॉल्व. तो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं नॉर्मली, इसलिए कंजेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनको कहते हैं. जब हम जीन्स की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की. और क्रोमोसोम्स दो तरह के हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स. मतलब एक जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, दे आर द सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरे ऑटोसोम्स में आते हैं जो हमारे बाकी फीचर्स को या बाकी एक्सप्रेशंस को, आंखें नीली होंगी, काली होंगी, गहरी होंगी, पीली होंगी, वो सब क्या करेंगे, ऑटोसोम्स करेंगे. लेकिन आप मेल होंगे, फीमेल होंगे या कुछ और होंगे, वो सब क्या करेंगे, आपके सेक्स क्रोमोसोम जो है वो उसको बताएगा कि आप ये क्या है. सो अब इसमें अगर आ जाएंगे तो ऑटोसोम्स में कैसी बीमारी आती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस. बहुत सिंपल है, जहां पे आपकी आइडेंटिटी, आपकी सेक्सुअलिटी के रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हों, है ना, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है प्रोडक्ट, तो उसको हम सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर मानेंगे. ठीक है. अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इन बाकी ये सब जो है वो आपका क्या है, ये डाउन सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एल्जाइमर्स, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं. मतलब आपके शरीर में कहीं और जगह पे एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं. कलर ब्लाइंड आपको आंखों में दिख नहीं रहा है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद योर सेक्स क्रोमोसोम, राइट. बट अगर आप ये देखें, ये तीन, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड सुपर मेल्स एंड सुपर फीमेल्स. सो एट द मैक्स यूपीएससी पूछ लेगा कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इट्स अ सेक्स. तो ये तीनों ही रखो, लाइन फिल्टर, टर्नर, सुपर मेल्स एंड फीमेल्स, और मोस्ट ऑफ द अदर्स आर लाइक ऑटोसोम डिसऑर्डर्स. देन प्रोमिनेंट वायरल इन्फेक्शन, हमने वायरस पढ़ा था. वायरल इन्फेक्शंस में चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, येलो फीवर, एचआईवी, मीजल, मम्स, रूबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस. देखो आपको क्या पढ़ना है, पहली बात तो इनका किस वायरस के कारण होता है. नॉर्मली वायरसेस के साथ हमारे लिए खुशखबरी ये है कि वो वायरस ना उस बीमारी के साथ ही जुड़ा हुआ होता है. मतलब कोई भी, अगर पोलियो ले लो तो पोलियो वायरस, रेबीज ले लो रेबीज वायरस, है ना, हेपेटाइटिस ले लो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस. तो उतना प्रॉब्लम नहीं है इसको याद करने में. प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इसमें पढ़ना क्या क्या है. देखो, फीवर, वेट लॉस, दिस एंड दैट, ये सब नॉर्मल है. कोल्ड, कफ, वेट लॉस, फीवर, ये सभी में होगा ही होगा, फीवर वीवर वगैरह.
लेकिन कुछ एक जैसे चिकनगुनिया है तो जॉइंट पेन इसमें ज्यादा होती है, डेंगू में जॉइंट पेन ज्यादा होती है। डेंगू का अगर आपको एक सिम्टम याद रखना है तो प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। दिल्ली में तो बहुत कॉमनली डेंगू होता है और उसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो हेपेटाइटिस में कौन कौन से हेपेटाइटिस का इंजेक्शन अवेलेबल है, कौन कौन सा नहीं है, ABCD वो आपको वो देखना है। रेबीज है, देन पोलियो है। पोलियो में आपका जो एक नर्व होता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो आपका एक लिम्ब जो है वो धीरे धीरे वो अपंगता की तरफ चला जाता है ना। सो आपको इतना ही याद रखना है, बाकी बहुत ज्यादा। एंसेफेलाइटिस जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस है, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस में सेफेलस का मतलब होता है ब्रेन और आइटिस का मतलब होती है इन्फ्लामेशन। तो कहीं भी सेफेलस आ जाए और उसके सिम्टम्स, इफ दे आर आस्किंग फॉर द सिम्टम एंड एनी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो सिम्टम्स होंगे वो किसी भी सेफेलाइटिस में होंगे। वो जापानीज इंसेफेलाइटिस में हो सकते हैं, दैट कैन बी इन, जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करके आएगा, तो उसमें भी इसके होंगे। बाकी इसके किस किस के वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं और किस किस के वैक्सीनेशंस नहीं अवेलेबल हैं, ये नोट से पढ़ लो। मतलब मैं बोल दूंगा यहाँ पे बट आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो वो आपको कैटेगराइज यही करना है कि किस किस के वैक्सीनेशन है, किस किस का वैक्सीनेशन नहीं है, और प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट कौन कौन सी डिजीज में क्या कौन कौन सा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, दैट्स इट। और एक चीज, एक दो चीजें और हैं इसमें, जैसे वैक्सीनेशन के ऊपर हम आते हैं तो ये मीजल, मम्स, रुबेला इनकी इकट्ठी वैक्सीन होती है। तो इसको एक बोलते हैं, ये आगे में वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द कोविड वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ वैक्सीनेशन, सो आई टेक अ डिफरेंट lecture on the vaccination because they can ask what is Salk, what is Sabin, what is killed, and what is this, um, what is trivalent, what is bivalent, है ना, मोनो, ओरल। तो ये वैक्सीनेशन के ऊपर मैं एक लूंगा, बहुत आसान है, बहुत इजी है, मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो नाम सिर्फ ऐसे हैं बट ऐसे बता देता हूँ। मीजल, मम्स, रूबेला जैसे एक शॉट में हम देते हैं इसको तीनों को इकट्ठा, तो इट इज अ ट्राइवेलेंट। तीन है तो ट्राइवेलेंट, दो होंगी तो बाइवेलेंट। तो दिस इज द वैक्सीनेशन। प्रोमिनेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, उनका ऑर्गेनिज्म का नाम जिसके कारण ये हो रहा है, बैक्टीरिया का नाम। वो भी क्लास ऑफ बैक्टीरिया होता है बेसिकली, जैसे कॉलरा है तो विब्रो कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब आपको इनके जो बैक्टीरिया है इनके पीछे वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्लेग है, एंथ्रेक्स है, लेप्रेसी है, तो मेरे एक्सप्लेन करने से कहीं अच्छा है कि आप इसको याद करना पड़ेगा और वो याद कर लो। और बार बार देखो, कोई भी टर्मिनोलॉजी को रटने मत जाओ आप नहीं रट पाओगे, मतलब क्योंकि आप इसलिए नहीं रट पाओगे कि बहुत बड़ा सिलेबस है और हो सकता है ऑन द वेरी लास्ट डे और बिफोर द एग्जाम्स आप दोबारा उसको रिवाइज ना कर पाओ, है ना। तो किसी भी टर्म को अगर आपको याद रखना है, द यू नो best thing about it, you just listen again and again and again and be comfortable with that term. Once you'll become comfortable with that term, then you can remember that. That's the simple way of mugging up these all things. If you'll keep on, if you'll write one side the disease is other side the bacteria, and if you'll keep on mugging it up, it will be very difficult. You just listen to those diseases and then just become comfortable, because for me I'm very comfortable with these like typhoid. So the first thing in my mind will go salmonella typhi. But for you it might be a little difficult because I'm very comfortable with these terms being a doctor. So for you my advice is just keep listening to these terms, keep just write it down on a paper, keep it somewhere. Don't try to mug it up once that आप बैठोगे और ये सारा याद कर लेंगे, मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उसको रखो, थोड़ा कंफर्टेबल होते रहो उसके साथ, 2 4 5 बार पढ़ोगे, सुनोगे, then you'll become comfortable with these things. Then these are the some of the again protozoan and fungal infection. So look, in fungal infection, athlete foot and candidiasis. Now these are all things, athlete foot, it is on the damp space. If one athlete will run on the damp space, he might get athlete foot, candidiasis. This is very common skin infection. If you'll get itching and all those things, you'll go to a doctor, he'll say it's a candidiasis. That is a fungal infection. And normally it happens on the tropical, most of the fungal infection happens on the tropical surface. Malaria is
Anopheles is the vector of that plasmodium. Then it has malaria has a lot of other forms also, vivax and falciform. Falciform is one of the highest mortality rate in malaria. Then vector is Anopheles, and African sleeping sickness is trypanosoma, and the vector is CC fly. So these things you have to remember. Like Kala-Azar, the vector is sandfly, pathogen is the Leishmania. Now this Leishmania is also called as Leishmaniasis, and in Kala-Azar you get a splenomegaly or your hepatomegaly. Hepatomegaly मतलब आपका liver का बड़ा हो जाना. Liver is hepatus also. You call in most of the medical terms for liver you'll use the word hepatic. Okay. Then amoebic dysentery, that is entamoeba histolytica, is a pathogen, that is amoebic dysentery. This is caused by the amoeba. And then comes the deficiency disorders. So we have seen that either virus can affect you, bacteria can affect you, protozoa can affect you, fungi can affect you. But in deficiency means when you take a food and it is not rich with the complete essential vitamins, minerals and those things, so it is called as a deficiency diseases. Look here also, either there are macros in your food, there are micros in your food. The macros are carbohydrate, proteins and fats. So these are the three macros that normally we consider, and then we have the micronutrients. Macro means we need those nutrition in these nutritional identities in a large quantity, and when it comes to micros, then you need in milligrams and that sort of thing. For these things we need in grams or something. So protein deficiency, protein energy malnutrition, essential fatty acids, and so if you'll go to protein deficiency, Kawashiorkar. Now protein energy malnutrition. So here energy terms you can just a minute. Energy term you can use it for carbohydrate basically. So in the initial stages it was protein carbohydrate malnutrition, but now it's a protein energy malnutrition, PEM we call it as. So in that protein will be deficient and you will be having a carbohydrate deficiency also. So that is called as a protein energy malnutrition. Marasmus is a difference. And back in medical days, this protein deficiency and protein energy malnutrition, there is a very common question. So in protein deficiency, the victim might be either thin or he might be fat also. But in case of protein energy malnutrition, the victim will be very thin. In Kawashiorkar, there will be edema. Edema means swelling in the body. So he may appear very healthy. A person who looks very healthy, not healthy is not a good term, but मोटापे को छुपाने के लिए हमने एक टर्म कॉइन कर लिया आजकल healthy. So it's not healthy, but if you are very fat, still you can suffer with the protein deficiency. But for the protein energy malnutrition, you have to be very thin. You will become very thin. You need not to be very thin, but you will become very thin if you have protein energy malnutrition. Then there is essential fatty acids that you can, linolenic acids and all. You can remember those also. But phrenoderma, derma means skin. Derma, dermatologist, derma clinic, derma care. So these are derma means skin, and phrenoderma means the skin will come, because they look these oils and fatty acids, what they do is they provide a lubrication to your body. So if you will have a essential fatty acids deficiency, so your skin will come very rough. So this is called as a phrenoderma. Okay, just remember the name. If they can ask the phrenoderma, so you can say that's a essential fatty acid deficiency. Then the mineral deficiencies comes, minerals like calcium. If you are calcium deficit, then bones, teeth, all those parts will be weak. Chlorine is basically what? Chlorine is like sodium and chloride. So salt. So salt, what does salt does? It helps in homeostasis. Homeostasis will be heavy words for you, so I'll tell you. ये आपके बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन कितना अंदर रखना है और कितना यूरिन के साथ बाहर देना है, वो जो पार्ट रहता है वो आपका सॉल्ट रेगुलेट करता है. If salt is more in the body, it will absorb water. If salt is less in body, it will
flush out the water. So it is chlorine again for the homeostasis, magnesium, then potassium and sodium. Look, like I said, sodium chloride we take, so chloride does this part, and the sodium potassium, it's important as a sodium potassium pump. So it basically helps to transport the energy also inside the body. So if and cell homeostasis also. Again, water intake and outburst is sodium potassium pump. Then the phosphorus. Phosphorus is again related with your bones and teeth, and iron, anemia and all those things will be related with iron. And fluoride, fluorine, and iodine. Iodine, goiter is a very common example of iodine. That's why we started as a iodide salt. Then vitamin deficiencies. So these are the minerals and these are the vitamins. So vitamins, they are the vital part of our food, and vital when we study the vitamins, so there are two part to it. One part is either it's a fat soluble, either it's a water soluble. जो भी आपकी बॉडी में जा रहा है वो दो ही मीडियम से आपके इंटेस्टाइन में जा सकता है, आइदर थ्रू वाटर, आइदर थ्रू फैट, और कोई तीसरा मीडियम होता नहीं है. मतलब आइदर तो ऑयल सॉल्युबल होगा, आइदर तो वाटर सॉल्युबल होगा. तो विटामिन्स विच आर वाटर सॉल्युबल्स, दे आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सीपी. दोनों में से एक याद रख लेना, बाकी दूसरी श्रेणी में आते हैं. मतलब फैट सॉल्युबल, इफ यू रिमेंबर द फैट सॉल्युबल विटामिन, देन इट इज अ ADEK, एंड अदर देन दैट B1, B2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 जो भी है वो वाटर सॉल्युबल होगा. दिस इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल vitamins. So in that also, if you'll go for vitamin A, so vitamin A that can cause problems related to your eyes. Vitamin D, again it is related with your bones. And vitamin E, okay, so for vitamin D and calcium, they work in a sync. तो जो हम कहते हैं कि सूरज की लाइट से विटामिन डी मिलता है, बेसिकली सूरज की लाइट से विटामिन डी सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. तो वो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, नहीं होता है तो फिर हम विटामिन डी को सप्लीमेंट करते हैं. विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्यूटी विटामिन, लाइक फॉर द हेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स you use vitamin E. Vitamin K has a major role in blood clotting. Calcium is also having a major role in blood clotting. So if question comes like which of the following have the role in blood clotting, so vitamin K, most of the time you know that it has a role in blood clotting, but calcium also has a there are factors for the blood clotting, and among those there are vitamin K, 11 or 12 blood clotting factors. So in that vitamin K also comes, and calcium also comes. Then water soluble B complex, B1, B2, B3, B4, that you know. And vitamin C, scurvy is a very common example for vitamin C. It's an antioxidant in your body. It helps in अगर अभी कोविड की बात चल रही है तो कोविड में काफ़ी बिका ये vitamin C, because other thing is vitamin C doesn't get stored in your body, so you have to eat it daily. For other vitamins, what you can do is you can take it in a large quantity and it will get stored in your body. But in case of vitamin C, daily you'll eat and your body will use it daily. If you will not take it for 3-4 days, your body will become deficit for vitamin C, and it's a very good antioxidant. है ना? Antioxidants are required. Okay, I'll tell you. Antioxidants क्या होते हैं? You have the free radical in your body which destroys your cells. अब वो कैसे बनते हैं? वो बुरा खाने से बनते हैं. तो वो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं, एक तरह से ये सोच लो कि वो चलते फिरते आपके सेल डिस्ट्रॉयर्स हैं. तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उनको वो कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. एंड विटामिन सी इज़ अ latest vitamin is vitamin P. So which of the following is not vitamin? And they write A, B, E and P, and I say P is not a vitamin, so it's a vitamin. Now not new, when I was back in medical in 2005-6, that time also vitamin P was there, but the latest one is vitamin P. Okay, cancer, its types and the treatment. We can take it in elaborately in a different section, but all in all, I'll just explain in a nutshell. Okay, cancer के साथ कुछ एक terms हैं that you should know. That is, it's cancerous or it is metastatic, or I'll explain that.
तो इन आवर बॉडी देयर आर टू टाइप ऑफ ट्यूमर. ट्यूमर का मतलब होता है मास, सेल्स. नाउ आई विल एक्सप्लेन. ओके, तो कोई भी हमारी बॉडी में मास जो डेवलप होता है, किसी भी तरह का मास, मास आप समझ रहे होंगे, जैसे कि कई लोगों को छोटे छोटे मासेस होते हैं, उसको मासेस का मतलब क्या बोलते हैं, गिल्टी जैसी होती है ना, उसको हम मास बोलेंगे. ठीक है. तो हमारी बॉडी में जब जहाँ सेल्स का गुच्छा बन जाता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, है ना, तो उसको हम बोलेंगे मास. तो वहां पे दो तरह के मास हो सकते हैं, आइदर बिनाइन और कैंसरस. बिनाइन का मतलब होता है जो कैंसरस नहीं है, मतलब जो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, मेटास्टाइज नहीं होता है ना. यहाँ पे एक शब्द आया, ये इंपॉर्टेंट है, मेटास्टैसिस. मेटास्टैसिस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको बोलेंगे मेटास्टैसिस. तो बिनाइंस में मेटास्टैसिस नहीं होती है, कैंसर में मेटास्टैसिस होती है. मतलब एक जगह पे अगर कैंसर है तो वो दूसरी जगह पे फैल सकता है बाय मींस ऑफ योर ब्लड, बाय मींस ऑफ कैविटी और लिम्फ नोड्स और ब्लड, तो उसको बोलेंगे कैंसर. लेकिन नॉर्मली बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर. सो ट्यूमर में बी ऑफ टू टाइप. ट्यूमर सेल्स का गुच्छा, ये याद रखना ना, फिर वो सब ट्यूमर को नहीं तो सब क्या समझने लगते हैं, कैंसर समझ लेते हैं. ट्यूमर इज डिफरेंट एंड कैंसर इज वन टाइप ऑफ ट्यूमर. सो ट्यूमर में बिनाइन एंड कैंसरस. तो बिनाइन आर समथिंग लाइक, जैसे आपके फैट का अगर एक मास बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइपोमा, विच इज नॉन कैंसरस, है ना. ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा घर पे भी, छोटे छोटे एक गोले से बन जाते हैं फैट के, उसको लाइपोमास बोलते हैं. उसी तरह से नर्व्स के हो सकते हैं, बहुत चीज़ों के हो सकते हैं, बट दे आर बिनाइन. सो बिनाइन, एक तो इनका ग्रोथ लिमिटेड होता है, मतलब बढ़ते हैं ये बट स्लोली 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 बढ़ते हैं. कैंसरस सेल्स क्या होता है, दे प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट मतलब दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स एट अ वेरी रैपिड pace. So that is cancerous cell. And sometimes the cancerous tumor or cancer at a place can take up to 80% of its blood supply. Though this is not a very factual thing that is UPSC going to ask, but just for the general knowledge, you know, sometimes we get that interest कि यार ये cancer क्या होता है. So cancer is that cells are regenerating at a rapid pace, and there is a one term for a de-differentiation. But anyhow, so cells are proliferating at a very rapid pace, that is cancerous cells. It can metastasize, means it can go to one place to other place. That means somebody is having a liver cancer, then the it can metastasize into his bones also. The same cells can metastasize to through blood to his bones, and you can get the cancer cells in your bones also. With the benign tumors, it doesn't happen normally. Okay, benign tumors means they are they'll be adherent to one place. They'll not go to other place, the same cells. So they'll not be metastatic in nature. Cancer causing agents are carcinogens. Genesis, this is a very common term. This is gens, means genesis. Genesis means production. So anything which is producing cancer is called as the carcinogens. Okay, simple, you can just understand it. Okay, so if we'll come to the its treatment modalities, you have a limited treatment, because the detection of the cancer is not easy, because the symptoms comes very late. अगर एक मास अंदर डेवलप हो रहा है, it will not show symptoms after a certain threshold.
After a certain threshold, when it will come very big and it will start affecting your body organs, then only you can detect there is a cancer. And normally at that stage metastasis हो गया रहता है, उसी को हम बोलते हैं ना आपका स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, वो सारा स्टेजिंग जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द metastasis. Means if it is confined to one place, it is stage 1. If it is into the lymph nodes, means it has just gone into the lymph nodes, it is stage 2. Which type of lymph node is involved, that also has a categorization. Then to which organ it has metastasized, that also has a this thing. So if it is confined to one place and by any mean you are able to detect it, that okay, it is localized to only one place, like in breast cancer if you have seen. So the metastasis happens at a very later stage, and the second thing is because it's an external organ and you can feel it. If it is in the abdominal cavity, you can't feel it, there is a cancer, but normally in your breast you can feel there are some nodules, and then you can go to a doctor, and after certain examination you can get to know that you have a problem in your breast. And in that case where metastasis hasn't happened and it is only confined to one place, then you can go for a surgical removal of that thing so that it doesn't spread to other places. So you can surgically remove that. So that is a surgical therapy. What if it has spread to another places, or it hasn't spread to another cases, but you are not sure because in any of the investigations you are not getting the hints that it hasn't gone to other places, then you can go to the chemotherapy. Chemotherapy comprises of two words, chemo and therapy. Chemo means chemical, chemical means there will be certain chemicals which can target certain types of cancer cells. So that is called as the chemotherapy, so that you inject that chemical into your bloodstream and that can kill those cells. If at all they are present at somewhere, then you can use the chemotherapy. Palliative chemotherapy is also there. Palliative means बचाव करने के लिए. In that case, you know their spread is massive and it has already spreaded and you can't reverse it. In that case, you give the chemotherapy to just decrease that load of the cancer. Outcomes are not very good, but you can increase the survivability of the patient. Then there are the radiotherapy. It again has a two component. One is radio, other one is therapy. Then you give the radiation to that specific part. Suppose if you have cancer here, then you will expose this area to high beam radiations and that will kill the cancerous cells. Then there are called as, this is the latest technology, this is called a immunotherapy. Monoclonal antibodies plus interferons, means your own body you try to have the antibodies which can kill the anti-cancerous cell. आप बोलोगे तो ये तो body को पहले कर देना चाहिए, but the problem with the cancerous cells, they are not very well differentiated from the normal cells. Differentiated means you can't differentiate this is normal cell, this is abnormal cell. If at a singularity you are talking that if you take one cell, the body can't distinguish it. Later on you can distinguish it. Some cells are like they are aging for like ages, and some cells are immature in nature. In that case you can differentiate, but overall they have the same characteristic of the cells from where it is proliferating. So immunotherapy, this is the latest one. And the cancer, this I told you, cancer causing agents are carcinogens. If you have heard about the carcinogen, I'll tell you, like if you use the plastic also, you'll say it's a carcinogenic in nature. It can cause cancer, but then you have a food grade plastic also, you have a food grade glasses also, all those stuff. So these all later on they'll what do you say, grade the food articles also or the packaging also on this basis, carcinogens, where how much risk you are carrying while using those products. So okay, it's a tumor. Tumor is of two types: benign tumor, malignant tumor. And okay, one more. Look, medical terms are very easy. Everybody will say just mug it up. You don't need to mug it up. You have to just understand, and you just try to break it down, and you'll come to a conclusion like abnormal and uncontrolled division of the body cells. It's called as neoplasm. Neo means new. So if new cells are
your body is generating a new cells at a rapid pace. It's called as neoplasm. That's it. So these are examples of the Internal Agency of Research on Cancer and Carcinogenic Classification. Again, this is the category 2B, 3B. You'll start from category 1. Carcinogenic to humans, this is category 1. You can understand it. I don't think I need to elaborate it because there is nothing to elaborate. If you find anything difficult, just text me, or you can just comment it on the video, and you'll get to know that what is category 1, category 2, A, B, and then 3 and 4. So in that, if you'll say, though, if you are coming to category 1, then highly cancerous things which can cause cancer, which actually cause the tissue or cell irritation, comes under this category, like sunlight. In sunlight also, if you don't have the UV protection, UV layer is getting depleted, so some sort of skin cancers it can cause. Then the wood dust and the tobacco, processed meat, alcoholic beverages. So these all are carcinogenic in nature. Then category 2, probably carcinogenic to human. So this is carcinogenic in humans. So you have the proofs that if you use these substances, then chances of getting cancer is very high. But for these, there are the probabilities that if you keep using these things, you might land up in cancer. This is night shift work, BPO persons, high temperature frying. ये जो आप समोसे तल तल के खाते हो, उसमें जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं जो हम रीयूज करते रहते हैं वाइल फ्राइंग, सो जो ब्लैक कार्बन के जो particles होते हैं, they are carcinogenic in nature. Red meat is carcinogenic in nature, one of the major cause of the cancer of your colon. Colon is your intestines, I think. Okay. Then working as a barber, hairdresser, because of those small hair particles which doesn't get digested also, and it goes into your alimentary canal, might be a cancerous if they stay for very long in your system. Glyphosate, these are for the when you sprays, some of the sprays which you use in agricultures, they are carcinogenic in nature. And category 2B, possibly carcinogenic to humans, less severe to this, but this. Then there are coffee, aloe vera, pickles, talc, and body powders. Talc based body powders, this brand, one of the brand, they got fined for ovarian cancer because their products we very Johnson and Johnson very commonly we use in our household for the babies and all, and they got fined in US and big time. So anyhow, not classified as to carcinogenicity in human. They are not classified, but they are not very harmful, like the magnetic field, insulation, glass walls, caffeine or tea, and fluorescent and hair coloring products. And these are probably not carcinogenic to humans, but maybe carcinogenic to other species. Okay, then comes the part that has become a multi-million industry in last 2 years, that is called as immunity. So nowadays, if you are buying a toothpaste, it is increasing your immunity. If you are buying coffee, it is increasing your immunity. So this is the concept of immunity. कुछ भी इसमें खतरनाक नहीं है, ये क्लासिफिकेशन नहीं कुछ भी नहीं है. This is very easy. You'll understand if you'll just apply your common sense. You'll get to know what is immunity. So there are two types of immunity: innate immunity and acquired immunity. That means by birth you have some immunity because there are germs everywhere around us. No matter which country, state, or wherever you live, there are germs around us. But those germs can't kill that baby. So it has some immunity that is from the genetics. It has immunity. And then acquired immunity. Acquired immunity, innate immunity means from the birth, inborn. Okay. And it depends upon the genetic factors also. Some races has a better survival rate for the babies, irrespective of the nutrition of the mother and all those stuff. Some you can say some of the races have a better immunity in case of some sort of
cancers also, some sort of diseases also. Some certain diseases are specific to certain areas also. So this is natural immunity. You are just born with it, you are just blessed with it. Okay. And then acquired immunity, that you acquire over the period of your life, means when you take birth, after that you start getting immune to other problems like active and passive. So if your body is actively involved in that immunity, it is called as the active immunity. It has your own, you are producing your own antibodies, your body actively producing those antibodies, then that is called as the active immunity. Passive immunity, when you are doing nothing, you are just lying down and doctors are coming and giving you injections of antibodies, prepared antibodies, that is passive immunity. Now this are, if my body is preparing antibodies, it may have a two way of producing it. One is natural exposure to agents, like if you are getting exposed to coronavirus, your body producing those antibodies to fight corona, that is called as the natural exposure, this thing. Artificial is when you are going for vaccination. You are not exposed to coronavirus, but you are vaccinated with some sort of some strain of coronavirus, dead, live. Oh, that is a different thing. So your body is, knowingly you are exposing your body to a certain antigen, so that your body can produce antibody. So there are two terms, antigen and antibody. Antigen, when you say the any disease causing organism, is called as antigen, and your body to fight that antigen is called as antibodies. Then there are passive immunities. Passive immunities also fall into categories, that is natural and artificial. Now what is this natural? Passively your body is receiving antibodies. Now how it can receive that antibodies? Either you put it through from outside, or you are given those antibodies from your mother. While when you take birth, your mother also passes certain antibodies. Look, this is a whole race is for the survival, and this survival, if you will not have a immunity while you'll take birth, something or the else will will catch hold of you, and you may die. So your mother will pass on some antibodies through breast milk also. That's why we promote breastfeeding so much. So it's the maternal antibodies, and artificial is antibodies from other sources. You prepare antibodies as such and you put it inside your body, that is called as a artificial. So immunity by birth you are blessed to have certain immunity. Acquired, that you acquire after taking birth. You can acquire naturally, that is your body can actively acquire it, or you are supplying it passively. Actively, either naturally you can acquire, actively your body can produce antibodies. If your body having an antibody, that is a natural exposure to any disease causing agent, it is called a natural. Artificial is through immunization, vaccination, what you say. Passively is natural, through mother to yourself. You are in this whole thing, you are just dealing with the antibodies. So this is natural antibodies. If your mother, here the production of the antibodies are happening. Here the antibodies are supplied to you by other means by your mother or by your doctor. So these are the two things. So antibodies type. Okay, so this is not very important, but still you should know certain things, that IgA this Ig stands for IgG, IgA, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, D, E. I think it's very difficult to understand for especially non-medico. Understand means because if you'll go to concept wise, it will take me another 2 hours. I can make you understand for sure in your foundation class, but at this revision time it's very difficult to make you understand the whole concept. So you just remember these things, that IgAM, E stands for allergy. Remember, IgE are very high in allergy. IgD activate B cells in your body. IgM activate complement system, control homeostasis is IgA.
So you just remember these terms: IgA, GMDE, or Ig stands for immunoglobulin. So that's it. Thank you. And if you have any queries, you just text me, or you can put it in the comment box, or you can meet me also after class also. We can talk about it. Thank you.